Have you seen Kutch yet? If not, you haven't seen anything in your life yet. और ये लाइन मैंने नहीं, अमिताभ बच्चन जी ने ये कही थी। आपने तो सुनी होगी, टीवी पे या फिर रेडियो पे या सोशल मीडिया पे तो सुनी होगी। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। But do you ever wonder why has he said such an iconic line about Kutch? The white sand of Rann, the colors of Kutch attract travelers not only from India but all over the world. And why not? ये जगह है ही इतनी खास और किसी जन्नत से कम नहीं। Where on one side the white spread of Rann and the white sand mesmerizes you, on the other side the local crafts and art will impress you. If you want to take a short break from your daily hectic routine, then Rann Utsav is the best destination to take off your travel bucket list. वैसे तो रण उत्सव के लिए 2 दिन भी काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ बिताना चाहो तो 1 हफ्ता भी कम पड़ सकता है। अगर आपको बहुत कम छुट्टियाँ मिलती है तो you can follow this quick 2-night 3 days itinerary which we are presenting to you in this video. Let's start the itinerary for a perfect holiday experience. We'll start our journey from Bhuj, which is the most convenient station or airport to reach the Ran Utsav. भुज पहुंच के सामान उतार के और एक स्वादिष्ट गुजराती नाश्ता करके हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। भुज पहुंचते ही हम सबसे पहले जाएंगे आईना महल, which is known as the Palace of Mirrors. Built in 1752 by Ram Singh Malan, it is constructed in European style architecture because the designer lived in Europe for 18 years and the top floor has been destroyed completely by the recent earthquake that happened in Bhuj. The lower floor, however, is open for tourists and hosts now a museum. The museum is a royal showcase of the Kutch style weaponry, art and handicrafts. Parag Mahal is named after Paragmal ji and it was severely damaged in the earthquake of Kutch. Later on, Amitabh Bachchan ji also commissioned the restoration of this palace. This palace also has a clock tower जहाँ से पूरा भुज का नज़ारा देख सकते हैं। पराग महल से निकलते ही हम जाएंगे पेट पूजा करने के लिए। एक गुजराती थाली का स्वाद उठा के हम निकल पड़ेंगे अपने आगे की जर्नी पे। खाना होने के बाद हम सीधे जाएंगे खारी नदी, which is also known as the Grand Canyon of Kutch. Now it's time to enter into the world of Bollywood. Do you remember हम दिल दे चुके सनम movie? लगान movie? The palace that was shown in these both movies. Yes, we are going to Vijay Vilas Palace. The royals of Kutch still use this palace as their summer home. The second floor is private, whereas the first floor is open for tourists. It also has a terrace which offers breathtaking views of the city. विजय विलास पैलेस से निकलते ही शाम का समय हो चुका होगा और सूरज चाचू को बाय बाय बोलने का वक्त तो हो गया होगा। तो अब हम जाएंगे सनसेट देखने के लिए मांडवी बीच। Here you can enjoy the camel ride, the horse ride and many more water sports on the beach. After a serene evening, we leave towards our hotel to end the day with a lot of memories. Day 2, सुबह उठते ही हम लोग जाएंगे कालो डूंगर, that is the Black Hill, which marks the highest point of the Kutch district. The Kalo Dungar also has a 400-year-old Dattatreya Mandir and it offers a large view of the surrounding areas. From here we can see the last western checkpost of the BSF, that is the Border Security Force, and from there Pakistan is only 40 kilometers long. On the way to Kala Dungar, we will also experience the magnetic field and we will see the Tropic of Cancer line, which is the central line of the northern hemisphere. After exploring the Black Hill of Kutch, we will now proceed towards our stay, which is a Bhunga stay. मिट्टी से बना घर और आइनों से सजाया हुआ हमारा स्टे गुजरात की संस्कृति दर्शाता है। भुंगा में सामान रखते ही, लंच करते ही हम निकल पड़ेंगे हमारे टूर के हाईलाइट पॉइंट को, जो कि है रण उत्सव। चमकते चांदनी के नीचे रन का सफेद नजारा आपके दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा। Imprinting the Ran's image in your heart forever, and after visiting the handicraft village of the Ran Utsav, we will go back to our Bhunga stay. भुंगा वापस पहुंचते ही आप वहां के लोकल ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक का आनंद उठा सकते हैं, साथ ही में गुजराती क्यूजीन का भी आनंद उठा सकते हैं।
इसी के साथ हम आज का दिन समाप्त करते हैं रन की खूबसूरत यादें लेके। डे 3 ट्रिप के आखिरी दिन हम जाएंगे धोलावीरा, which is also known as the road to heaven because it is surrounded by water by both its sides. This road to heaven leads us to an interesting site, which is Indus Valley Civilization's Harappan city, which contains ruins of the city even today. This site is also recognized and controlled by the ASI, which is the Archaeological Survey Department of India. And if you're lucky enough, you may also get to see the migratory greater flamingo birds here in thousands of numbers. इतिहास के पन्नों में खोने के बाद असलियत में वापस आके हम जाएंगे अपने आगे के सफ़र जारी रखने के लिए। इसके बाद हम करेंगे लंच और लंच के बाद हम निकल पड़ेंगे वापसी के जर्नी में। कच्छ से वापस भुज पहुंच के हम अपनी सफ़र की समाप्ति यही करेंगे। And from here we will proceed to our home carrying a huge treasure box of memories which will be cherished forever in your heart. If you are still on this video, thank you for making it till here. And if you like our video, please do like and subscribe our channel and do share it with your friends so that it will be helpful for them to plan their next trip to Ran Utsav. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जगह का इन्फॉर्मेशन लेके और एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे देखना चाहते हो तो हमें टॉपिक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक घूमते रहो, हंसते रहो और खुश रहो। धन्यवाद।